Good morning, students. In our previous class, we have already discussed the impulse conducting system and the cardiac cycle. So let's start today regarding mechanism of working of heart and how double circulation occurs with reference to double circulation. As I have already told you that three events that occur during each beat inside your heart, that is atrial systole, ventricular systole, joint diastole. Our heart beats 72 times per minute. Single beat includes single contraction and single relaxation. Single contraction, single relaxation. Contraction phase is called systole, relaxation phase is called diastole. So 72 times it beats in a minute. So for a single beat, for a single contraction and relaxation, for a single systolic phase and diastolic phase, it takes 0.1 second. So during that 0.1 second, inside the heart, three things to happen. One is atrial systole, atrial systole 0.1 second. Second is your ventricular systole, that is 0.3 second. And third is your joint diastole, that is 0.4 second. Mechanism of working of heart. Mechanism of working of heart, or how does heart works? How does heart works? Let's see. So inside the heart, during each beat, during each contraction and relaxation, during each systolic and diastolic phase, these three things to happen. And these three things that repeats in each subsequent 0.8 second. In each subsequent 0.8 second, the same things, atrial systole, ventricular systole, joint diastole, the same thing repeats, and that is called cardiac cycle. That means the cyclic events that occur inside the heart during each beat is called cardiac cycle. So आम लाइफ रे जेते 0.8 सेकेंड आम लाइफ रे आसीबो स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, जेते 0.8 सेकेंड, प्रत्येक 0.8 सेकेंड रे एभली तीनोटी घटना आम हार्ट रे घटुची। एई घटना गुड़िकर ता परवर्ती 0.8 सेकेंड जेते दिन आसीबो, जेते समय आसीबो, repeats, that is called cardiac cycle. And so what happens during that three events inside your heart? Let's see what happens during atrial systole, what happens during ventricular systole, and what happens during joint diastole. देखो पिला माने
सो या पढ़ा आमे प्रथम से तार स्ट्रक्चर बाबद पिला माने पढ़ीचे यू मस्ट हैव दैट नॉलेज बिफोर गोइंग टू दिस द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. So what happens during atrial systole? What atrial systole means? So atrial systole means both the atria undergoes simultaneous contraction phase. Both the atria undergoes simultaneous contraction phase. This is your right atrium, this is your left atrium, this is your right ventricle, this is your left ventricle. So during atrial systole, both the atria undergoes simultaneous contraction phase. एकादिक्रमे दुईटी जेक अलिंद संकुचित अवस्था को आसबे. सो ये गोटे पिला माने प्रश्न व्हाट इनिशिएट्स दैट व्हेन इट अकर्स एंड से आम गोटे जिनिस पढ़ीचे इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम. से बिफोर आम गोटे पढ़ीचे इम्पल्स कंडक्टिंग सिस्टम. What is that impulse conducting system? Now our heart is myogenic heart. The initiation for contraction and relaxation of our heart with a patch of a muscle that is called your pacemaker or sinoatrial node. Means initiation for contraction and relaxation of heart occurs with a muscle, that's why called myogenic heart. So when the impulse generated at SA node, travels with internodal pathway to AV node, both the atria get that message, get that signal, get that impulse to begin to initiate contraction and relaxation. So both the atria undergoes simultaneous contraction phase. So जेतेबेले दीटा जाक atria simultaneous contraction phase को जाउची पिला माने what happens? Volume decreases, pressure increases. So कौन होबो? आमे देखिबा दीटा जाक चैम्बर रे कौन थिला. Already we have discussed. Your right atrium get filled with deoxygenated blood that comes through three main veins. Superior vena cava from upper body part, inferior vena cava from lower body part, coronary sinus from heart itself. तामाने तुमरो राइट एट्रियम टी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा परिपूर्ण होईची, तुमरो लेफ्ट एट्रियम टी ऑक्सीजनेटेड ब्लड द्वारा परिपूर्ण होईची. दैट कम्स थ्रू टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन फ्रॉम लंग्स. So left atrium get filled with oxygenated blood, right atrium get filled with deoxygenated blood. In this condition, as the impulse generated from SA node travels to AV node through various internodal pathway, both the atria undergoes contraction phase, volume decreases, pressure increases. The increased pressure forces the contents of the respective chamber. ये सब चैम्बर रे रेस्पेक्टिव चैम्बर रे जहाँ सब कंटेंट अच्छी राइट एट्रियम रे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी, लेफ्ट एट्रियम रे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड अच्छी, दे कंपेल टू गो समवेयर एल्स. कुआडे ले जिबा को चाहिए.
सो कुआडे पिला माने जिबे लेट्स सी हाउ मेनी ओपनिंग्स आर देयर इन ईच चैम्बर राइट एट्रियम रे कौन कौन पिला माने ओपनिंग अच्छी ना ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस एंड राभा ओपनिंग राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर सेमिति एठी लेफ्ट एट्रियम रे कौन ओपनिंग अच्छी ओपनिंग ऑफ पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर अपर्चर तेणु पिला माने फील करो जे ए दुईटा जाक चैम्बर संकुचित हैला एकादिक्रमे वॉल्यूम कमिला प्रेशर बढ़िला से बढ़िबा प्रेशर टी दैट इंक्रीज्ड प्रेशर कंपेल द फोर्सेस द कंटेंट्स ऑफ द चैम्बर deoxygenated blood of right atrium oxygenated blood of left atrium they compel that blood to go somewhere else एठी पिला माने रिवर्स फ्लो थ्रू सुपीरियर वेना कावा इंफीरियर वेना कावा कोरोनरी साइनस इज प्रिवेंटेड जेते बेले चैम्बरटा संकुचित हो जाउची वॉल्यूम जेते बेले कमुची वर्धित चाप ए चैम्बर रे थिबा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कुआडे हेले ठेलिबो कुआडे जीवो ना से चैम्बर रो ओपनिंग देकिरी बाहरी जीवो बट एपटे जो तीनोटी ओपनिंग अछि सुपीरियर वेना काभार ओपनिंग इंफीरियर वेना काभार ओपनिंग कोरोनरी साइनस रो ओपनिंग सेपटे देई रिवर्स फ्लो प्रिवेंट हेची because of presence of valves your inferior vena cava is associated with eustachian valve your coronary sinus is associated with Thebesian valve but here pila mane though a specific valve is not present at the superior vena cava opening still reverse flow is prevented why two things happens superior vena cava रे कौनसी स्पेसिफिक भाल्व नथिले मध्य सेई पटे रिवर्स फ्लो हुए नहीं बिकॉज नंबर 1 एमिति ऑर्डिनरीली वेन्स आर प्रोवाइडेड विथ इंटरनल valve number 1 number 2 at the place of opening of superior vena cava at the place of opening of superior vena cava which is an oblique aperture during contraction the aperture becomes squeezed so that reverse flow is prevented so anyway reverse flow through three main veins is prevented एपटे सेमिति with same mechanism though no specific valves present in pulmonary vein still reverse flow is prevented so only opening remain open only opening left open is your rabha and labha is your rabha and labha right atrioventricular aperture left atrioventricular aperture so through right atrioventricular aperture deoxygenated blood from right atrium come to right ventricle through left atrioventricular aperture oxygenated blood from left atrium come to left ventricle all this occurs all this happens in 0.1 second that is your atrial systole so पिला माने आउ थरे कहूची कौन हुए atrial systole रे कौन हुए से 0.1 सेकेंड रे during this 0.1 second during atrial systole both the atria undergoes simultaneous contraction phase volume decreases pressure increases
The increased pressure forces, the increased pressure compel the contents of the chamber. Who are the contents of chamber? Deoxygenated blood in right atrium, oxygenated blood in left atrium. They are the contents of the respective chamber. So that increased pressure forces the deoxygenated blood to go somewhere else. That increased pressure forces the oxygenated blood in left atrium to go somewhere else. But truly, what happens? A reverse flow prevented through respective veins. Superior vena cava, inferior vena cava, coronary sinus of right atrium, pulmonary vein of left atrium. Because of presence of specific valve. Though superior vena cava and pulmonary vein, they are not associated with specific valves, still reverse flow is prevented because number one, veins, they are associated internally with valves ordinarily. Number two, at their opening, when contraction occurs, the opening becomes squeezes. So ultimately, right atrium ro deoxygenated blood of right atrium come to right ventricle, oxygenated blood of left atrium come to left ventricle. Eta gala 0.1 second. Okay. Then ये हला SVC, IVC, CS, ये हला pulmonary vein. Okay. So, second कौन हबो पिला माने ventricular systole. So then let's see what happens during ventricular systole. As the name indicates, in ventricular systole, both the ventricle undergoes simultaneous contraction phase after this 0.1 second. After this 0.1 second, both the atria and ventricle undergoes simultaneous contraction phase. Signaled by कहा द्वारा सिग्नल होबो ना एठी जो छाड़ी थिला impulse, that impulse from AV node come through bundle of His and Purkinje fiber. When the impulse present in AV node, that impulse responsible for initiating the contraction and relaxation of what? Present that in AV node comes through AV bundle or bundle of His and Purkinje fiber. Both the ventricle get their signal to begin contraction and relaxation. And both the ventricle undergoes simultaneous contraction phase. Same things will happen. What? Volume decreases, pressure increases. The increased pressure compel the contents of the respective chamber, deoxygenated blood of right ventricle, oxygenated blood of left ventricle to go somewhere else. कुआड़े हेले तमे जा कुआड़े जने जीवो जुआड़े ओपनिंग थी सियाड़े जीवो. सो आमे देखिबा राइट वेंट्रिकल रे और लेफ्ट वेंट्रिकल रे who are the openings, how many numbers of openings and who are they. Right ventricle रे कौन पिला माने अच्छी ना there is
an opening called right atrioventricular aperture. But right atrioventricular aperture is guarded with tricuspid valve. That tricuspid valve prevents the reverse flow of the substance. Similarly, left atrioventricular aperture is associated with mitral valve or bicuspid valve, and that mitral valve also prevents the reverse flow of the substance from left ventricle to left atrium. Left ventricle ru left atrium को prevent हला. So ultimately blood कुआडे जीवो, another opening right ventricle ru blood आसिला lungs एठिके आसिला lungs को आसिला किए नेला पिला माने ना pulmonary aorta so right ventricle रो deoxygenated blood टी pulmonary aorta देकरी गला कोठी की lungs को, because reverse flow is prevented due to presence of tricuspid valve. In the same way left ventricle रो पिला माने लेफ्ट वेंट्रिकल रो पिला माने आसिला ब्लड कोठी की ऑल बॉडी पार्ट, ऑल बॉडी पार्ट्स किए आनिला सिस्टोमिक एओर्टा, सिस्टोमिक एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये कौन नेला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके देखो पिला माने व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल माने कौन, बोथ द वेंट्रिकल अंडरगोज साइमल्टेनियस कंट्रैक्शन फेज, दुईटा जाक निलय एकादिक्रमे संकुचित अवस्था को आसीबे केते बेले सिग्नल्ड बाय तापय सिग्नल कौन ना तापाई सिग्नल होची एभी नोड रे थिबा इंपल्स टी इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स वेव ऑफ कंट्रैक्शन दैट इज नीडेड फॉर इनिशिएटिंग कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, जोटा एभी नोड रे अछि एभी नोड रु गोटे बंडल ऑफ हिस हेकरी पुरकिंजे फाइबर हेकरी जेते बेले टोटल वेंट्रिकल को से जो इंपल्स ता स्प्रेड कला दीटा जाक वेंट्रिकल संकुचित हवा पाई सिग्नल पाइले. बोथ द वेंट्रिकल आल्सो अंडरगोज साइमल्टेनियसली कंट्रैक्शन फेज, वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, द इंक्रीज्ड प्रेशर compel the deoxygenated blood to go through pulmonary aorta to lungs.
and oxygenated blood of left ventricle come through systemic aorta to all body parts. Since the reverse flow through right atrioventricular aperture, left atrioventricular aperture is prevented due to presence of tricuspid and bicuspid valve. Okay? Acha. Blood now at lungs, blood now at all body parts. Then what happens? Joint diastole. During this phase, neither of the part, neither atria nor ventricles, neither of the part of heart undergoes contraction phase. That means all the parts remain in relaxation phase, that is called purge of heart. So दी जन जाक रिलैक्सेशन फेज रे अछंती ताहले कौन हबो पिला माने लंग्स रो ब्लड टा आसीबो कोठी के ये पल्मोनरी वेन देखिए आसला लंग्स को ब्लड पल्मोनरी वेन देखिए कौन आसला ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड एवं ब्लड आफ्टर ऑक्सीजनेशन ऑफ फूड ऑल बॉडी पार्ट रू ब्लड आसला कोठी के ना ये पिला माने हला एसवीसी IVC and CS. SVC, IVC, CS. तामाने एठी पिला माने oxygenated blood now becomes deoxygenated. Oxygenated blood now becomes deoxygenated. एठी पिला माने कौन हला deoxygenated blood now becomes oxygenated. एठू ऑक्सीजन टा गला एटमॉस्फेयर को कार्बन डाइऑक्साइड आसिला एवं ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिऑक्सीजनेटेड ब्लड टा एठी ऑक्सीजनेटेड हला deoxygenated blood becomes oxygenated. तामाने ये जो राइट वेंट्रिकल रो पल्मोनरी एओर्टा ने की जाइथिला deoxygenated blood in which concentration of carbon dioxide is more एवं concentration of oxygen is less. concentration of oxygen is less. सेठी कार्बन डाइऑक्साइड को छाड़ी देला कोथरे ना एक्सपिरेशन रे इंस्पिरेशन रे आनिला ऑक्सीजन को एवं नाउ ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड. लंग्स रे पिला माने डिऑक्सीजनेटेड ब्लड गला ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहरिला. ऑल बॉडी पार्ट रे ऑक्सीजनेटेड ब्लड गला डिऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहरिला. ता माने दीटा जाक वेंट्रिकल एवं दीटा जाक एट्रियम जेते बेले साइमल्टेनियसली रिलैक्सेशन हेले देख पिला माने मु स्क्वीज कर देथिली कंट्रैक्शन कर देथिली
ब्लड राइट वेंट्रिकल रु पळैथिला मो राइट वेंट्रिकल टाको रिलैक्स कर देबी याडे पळे आसीबा कथा बट एठी रिवर्स फ्लो हेलानी एथि पई बिकॉज दिस pulmonary aorta is guarded with semilunar valve. Semilunar valve ता माने फील करो पिला माने राइट वेंट्रिकल टाको मु स्क्वीज कर देली कंट्रैक्ट कर देली ताले संकुचित हो गला अधिक प्रेशर रे ब्लड टा पळे गला किंतु सेही राइट वेंट्रिकल जेते बेले रिलैक्स हला सेही बटे पळे आसीबा कथा reverse flow through pulmonary aorta is prevented due to presence of semilunar valve. ठीक सेमिति लेफ्ट वेंट्रिकल रु जेते बेले स्क्वीज कर देथिली से पळैथिला सिस्टमिक एओर्टा आउ तार ब्रांच को ऑल बॉडी पार्ट को लेफ्ट वेंट्रिकल जेते बेले रिलैक्स कर देली सेही पटे पुनी पळेबा कथा ब्लड बट सिस्टमिक एओर्टा इज guarded with semilunar valve ता माने during both atria and ventricular relaxation oxygenated blood from lungs come to left atrium your left atrium get filled with oxygenated blood and from all body parts deoxygenated blood come to right atrium your right atrium get filled with deoxygenated blood. Reverse flow through systemic aorta and pulmonary aorta. Reverse flow through systemic aorta and pulmonary aorta are prevented due to presence of semilunar valve. So this is all about your mechanism of working of heart. That means एट्रियल सिस्टोल बेले कौन हला ना दुईटा जाक एट्रिया कंट्रैक्शन हला दीटा जाक एट्रियम रो रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल को ब्लड आसिला वेंट्रिकुलर सिस्टोल बेले कौन हला दीटा जाक वेंट्रिकल कंट्रैक्ट हला राइट वेंट्रिकल रो ब्लड गला लंग्स को लेफ्ट वेंट्रिकल रो ऑक्सीजनेटेड ब्लड गला ऑल बॉडी पार्ट को जॉइंट डायस्टोल रे कौन हला दीटा जाक उभय एट्रियम एंड वेंट्रिकल undergoes relaxation phase so lungs रो oxygenated blood left atrium को आसिला all body part रो deoxygenated blood right atrium को आसिला both right atrium and left atrium get filled with respectively deoxygenated blood and oxygenated blood because reverse flow through pulmonary aorta and through systemic aorta prevented due to presence of semilunar valve एटा भी semilunar valve एटा भी semilunar valve ता माने systemic aorta and pulmonary aorta they are guarded with semilunar valve and that valve prevent the reverse flow through them so आरो क्लास रे पिला माने आकु ने की पिला माने पढिबा what is double circulation and all the things thank you